Hi, a very good morning to all of you. Just a second. Okay. Okay. So this session is all about South Asian University. ठीक है. And like most of you should be aware कि आज last date है for registration at SAU. ठीक है. Today is 4th of April and today is the last date of registration for admissions at South Asian University. ठीक है. So I'll try to take everything possible in this session, starting from how to apply, test, dates, syllabus, intake, modes, everything. ठीक है. So this is your homepage for South Asian University, right? Whenever you Google out, this is the first page that will pop up. Right. So अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, this is the frame wherein they talk about the admissions and all the details. Right. Now, before I start the session, if you look at the important note जो यहाँ पे अभी चल रहा है, which clearly says that admission webinar scheduled for 4th of April because today is the last date of admission, right? Today is 4th of April and today is the last date of admission. Okay, so सबसे पहले, how do you go about it, right? South Asian University offers you Masters in Economic course, right? And I'll just straight away go to the course एक बारी so that it's easier for all of you. 1 second. I hope you just saw that the last date to apply is 4th of April. I'm repeating again and again because today is the last date, right? So just a second. Okay. So here are the master's course, PG courses that SAU offers. And if you go and click on MA Economics, so this is the homepage for your particular course, MA Economics with specialization in economic development. So ये आपका पूरा course का नाम है, right? Course name हो गया. Now, how can you take admission at SAU? So this year, what they have followed is there are two mediums or two modes to get admission at SAU. पहला है direct admission, and then the other one is the competitive national level competitive exam. ठीक है. So let's scroll down and see how they have defined everything. Okay. So this is your 2-year course. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ईदर एट बैचलर्स लेवल और +2 लेवल. साउ में दे हैव मेंटेन मैथमेटिक्स एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट? अब लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स पहले. ठीक है. एट साउ यू हैव टोटल इनटेक ऑफ अराउंड 60, wherein they have divided that into 30 each. 30 each meaning 30 for the Indian students and 30 for the अदर सार्क कंट्रीज. ठीक है. अब हम जो बात करेंगे, सो फॉर अस दिस इज द नंबर विच कंसर्न्स अस कि हमारे लिए 30 सीट्स हैं ओवरऑल. ठीक है. अब उन 30 सीट्स में भी क्या किया है साउ ने, दे हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 मोड्स. एक साउ एंट्रेंस टेस्ट, एक है डायरेक्ट मोड. दोनों में उन्होंने 50% एलोकेशन किया हुआ है. सो 30 में से 15 सीट्स होंगी साउ एंट्रेंस से एंड बाकी रिमेनिंग 15 होंगी फ्रॉम द डायरेक्ट मोड. ठीक है. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि हाउ द एंट्रेंस पेपर एंड सिलेबस दे हैव मेंशन्ड इट. ठीक है. सो अगर पेपर की बात करें, सो द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 आवर्स का पेपर रहेगा. 120 मिनट्स will consist of 70 MCQ based question. ठीक है. So 2 hours MCQ based paper. ठीक है. Objective मतलब and 70 questions overall, right? So these are the 3 points we can take out of these 2 pointers. Lastly, no negative marking. So आपको जितने shots लेने हैं, जितने attempt देने हैं questions पे, even where you feel doubtful, तो आप फिर भी attempt कर सकते हो. So no negative marking, 70 question, MCQ based and 2 hours. ये बात हुई साउ के एंट्रेंस टेस्ट के कंटेक्स्ट में. ठीक है. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एंट्री वाई साउ एंट्रेंस टेस्ट, तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एंटायर पेपर. ठीक है. और इन टर्म्स ऑफ सिलेबस दे हैव मेंशन्ड इट ब्रॉडली, माइक्रो मैक्रो डेव मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स. ये सारा वही सिलेबस है अगर उन्होंने ओवरऑल आपको दिया हुआ है दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन मल्टीपल एग्जाम्स. ठीक है. स्पेशली द मोस्ट रिसेंट वन आपका
Okay, Shava says, does SAU provide placements? Yeah, देखो, placements is always the main concern of student, and at times they are able to have companies on board. But अगर हम बात करें बहुत अच्छा, so I won't say कि बहुत ज़्यादा अच्छा placement criteria रहेगा, because साउथ में students who come, majority of them seek higher education, शायद वो PhD करना चाहते हैं, ठीक है. The other, some of them would be writing competitive exams, चाहे वो IAS हो, चाहे वो RBI हो, ठीक है. So the proportion of students जो यहाँ पे होते भी हैं who seek placements are pretty less, especially also because they know कि हाँ यहाँ पे इतना ज़्यादा placement heavy culture नहीं है. But being an international university, it gives you another level of recognition, ठीक है. So I can't say outrightly कि हाँ प्लेसमेंट हैवी रहेगा पूरा, ठीक है. सो दिस इज द सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है. ये छोटा छोटा चीजें वी ऑल नो राइट नाउ. Okay. So eligibility, I'll again reconfirm for all the students. Candidate must have passed BA, BSc degree under 10 to 3 जो scenario है, और जो नया pattern है, they have acknowledged that as well. मतलब a 4-year degree, तभी आप यहाँ पे 3 की जगह 4 देख रहे हो. Pattern from a recognized institution with a minimum 50% of marks. ठीक है. अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंड ऑफ एलिजिबल, क्योंकि 50% तो ऑलमोस्ट सबका ही होता है. बट अगर आप यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट which states mathematics as a subject either at +2 or at bachelor's level, that's kind of a mandatory thing. ठीक है. So you need to cross check कि क्या आपके पास मैथ्स था +2 में या नहीं, और इवन एट द बैचलर्स लेवल, चाहे वो कोर सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ठीक है. सो दे हैवंट मेंशन दैट. सो इट सूट्स, चाहे वो ऑप्शनल हो या कोर हो, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट्स अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. ओके. सो एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, फॉर्मेट ऑफ पेपर, सिलेबस, ऑल दैट इज सॉर्टेड, ठीक है. अब आ जाते हैं, वन सेकेंड, ठीक है. दिस वी हैव डन. सैम्पल पेपर ये है, वेबसाइट पे आप चाहो जाके आप सैम्पल पेपर देख सकते हो इजीली, एंड वी हैव सॉल्व दिस पेपर एज वेल. ओके. लास्ट डेट इज 25 ऑन कैंपस, ठीक है. दिस वी हैव डन. ओके. अनदर क्वेरी कि जो एग्जाम है, जो एंट्रेंस टेस्ट है फॉर साउ, वो कैंपस में होगा या दे हैव मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड गिव योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है. सो यस, साउ हैज मल्टीपल सेंटर्स, मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स across India, and these are the centers which are available in case you decide to give SAU का test, ठीक है. So entrance will be held at the following test center as per the mentioned schedule. Efforts will be made to allocate the center chosen by the candidates in the application form. However, the number of candidates that in center becomes too low, the candidate from the center will be transferred to nearest center. ठीक है. सो दैट इज ऑब्वियस, ये हर जगह ही होता है अगर आपके पास सेंटर एलोकेशन रहता है. सो इन केस देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो यू आर काइंड ऑफ एडजस्टेड समवेयर एल्स, और इवन इफ देयर आर टू लेस स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर सेंटर, सो दे माइट जस्ट मूव यू टू दैट पर्टिकुलर सेंटर. सो दैट्स अनदर थिंग. लेकिन you don't have to travel to Delhi at the South campus to give the entrance exam. You have the liberty to attempt your test at any of these centers. So these are the test centers spanned across the country जहाँ पे जाके आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो. कोशिश उनकी भी यही रहेगी कि जो आपने चूज किया है टेस्ट सेंटर वो ही आपको मिले. बट वर्स्ट केस सिनेरियो में दे माइट जस्ट शिफ्ट यू, अगर लेकिन अगर वो शिफ्ट भी होगा तो दैट माइट बी जस्ट टू द नियरेस्ट सेंटर, ठीक है. सो टेस्ट सेंटर इज ऑल्सो सॉर्टेड फॉर ऑल ऑफ यू. Okay, now let's come to the important dates, right? When we talk about important dates, today is the last date of submission of application, which is 4th of April, right? In terms of entrance exam का date क्या है? So the date of entrance exam for SAU is 26th and 27th of April. ठीक है. इन दोनों में से कोई एक डेट आपको दी जाएगी. आपका जो एडमिट कार्ड होगा वहां पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका डेट ऑफ एग्जाम क्या है. इट्स ईदर 26th और 27th of April this month.
ठीक है. So it's clear. Last date and the date of examination is also crystal clear to all of you. You don't have to travel to South Center in Delhi. You have multiple test centers जहां पे जाके आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो. ठीक है. Now, up to confirm you कि डेट ऑफ एग्जाम 26th है या 27th है, दे हैव आल्सो मेंशन यहाँ पे पहले से ही. ठीक है. सो यू नीड नॉट वेट फॉर इवन फॉर द एडमिट कार्ड, राइट. सो आपका मॉर्निंग सेशन रहेगा फॉर एमए इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इको. उसमें जो एग्जामिनेशन है दैट इज कंफर्म फॉर 26th of April, विच इज अ सैटरडे, एंड इट्स अ मॉर्निंग सेशन. ठीक है. Morning session 26th April is the date of exam for SAU. Mota mota you have 21 days, 21, 22 days left. ठीक है. So date, test center, everything is clear beforehand. Now, अब मेरा मन नहीं है वाया SAU entrance test. तो मेरे पास क्या क्या options है. ठीक है. So one second, there is another screen which I want to show you. Then I will inform you. एक second. This we have done. To mode of admission. हाँ, ये वाला. Okay. So like I told you, there are दो मोड हैं, दो मीडियम है जिससे आपको एडमिशन मिल सकता है साउ में. एंड here are the two modes. पहला है एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट. ठीक है. एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट इज नथिंग बट द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट, जिसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे, जो 26 तारीख को है. मॉर्निंग स्लॉट है. And what else? The test centers. The test centers are already there. ठीक है. I'll also come to the fee वाला part. ठीक है. I'll just confirm you the दो medium. ठीक है. So entrance test mode हुआ आपका जो साउ खुद कर रहा है, जिसका वी ऑलरेडी डिस्कस द पेपर पैटर्न, टाइमिंग, मार्किंग, एवरीथिंग ब्रीफ में. ठीक है. That is the entrance test mode. The other mode is the direct mode, which means admission without going through the SAU entrance test. अब बहुत से बच्चे होंगे जो शायद आज भी फॉर्म फिल ना करें, and maybe later on they realize कि मतलब I should have filled it. So you need to remember, if you don't want to sit for SAU का test, then there is another mode जो कि है without SAU entrance test, जिसमें what all they accept is mentioned यहाँ पे. ठीक है. सो डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट एंट्री के मीडियम में आपको एडमिशन किस तरीके से मिलता है. फर्स्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड देन फॉर नॉन इंडियन स्टूडेंट्स अदर देन इंडिया. ठीक है. सो विल टॉक अबाउट ये वाला पोर्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. सो इन केस यू आर अपियरिंग फॉर, कहाँ गया अपना इको. ओके. सो दिस इज एमए इको स्पेशलाइजेशन इन डेवलपमेंट इको. तो अगर आप इसके आगे देखोगे, सो दे आर एक्सेप्टिंग योर सीयूईटी पीजी स्कोर, राइट. सो एक मीडियम हो गया साउ एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा मीडियम हो गया सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, राइट. सो ये दो मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो. अब वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट क्या दोनों मोड में आपको एक ही फॉर्म भरना है या देर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स या एडमिशन प्रोसेस अलग अलग है. ठीक है. वो अभी विल डिस्कस इन गोइंग फॉरवर्ड, राइट. सो इट्स क्लियर, दो मीडियम है, साउ एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी पीजी को, राइट. दोनों मोड्स क्लियर हो गए. पहले का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पैटर्न, द टाइमिंग एंड एवरीथिंग, मार्किंग एज वेल. ओके. अब एक बारी लेट मी जस्ट आंसर ये वाला क्वेरी विच यू गाइज आर आस्किंग, विच इज रिलेटेड टू द फीस, राइट. मोस्ट लाइकली ये जो फीस है, ये दिस इज द कोर्स फी. That's the admission fee, right? Yeah. There's not the entrance वाला fee. Just a second. ठीक है. पहले I'll just tell you about the fees as well. लेकिन अभी पहले देख लेते हैं through direct me, through entrance test, कि how you have to register it. One second. And also your session starts, I guess, यहाँ पे जो dates थी, I didn't inform you. But yeah, your session starts from 28th of July. ठीक है. So May, June, July, मोटा मोटा 3 महीने हैं. Once you
you are done with your entrance exam on 26th of April. ठीक है. हाँ, so the दो points और we will discuss. पहला is related to the how do you apply. ठीक है, ये रहा. सो ये रहा आपका स्क्रीन. हाउ डू यू अप्लाई. सो जैसे हमने डिस्कस किया, दो मोड्स हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन है. सो लेट मी रिपीट अगेन एंड अगेन. साउ एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी पीजी, राइट. अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कैटेगरिकली मेंशन भी है साउ एंट्रेंस टेस्ट मोड, डायरेक्ट एडमिशन मोड, राइट. सो अगर आप साउ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाना चाहते हो तो आप इसके थ्रू अप्लाई करोगे. वेयर एज इफ यू सी कि मेरा सीयूईटी बहुत सॉलिड गया है एंड आई विल बी एबल टू सिक्योर एडमिशन, तो आप इसके थ्रू अप्लाई करोगे. ठीक है. सो आई होप ये दोनों स्क्रीन्स आपको क्लियर हैं. तभी यहाँ पे मेंशन है इन इंडिया बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑफ नेशनल लेवल टेस्ट. और हमारा नेशनल लेवल टेस्ट क्या था? सीयूटी पीजी इको. ठीक है. सो डायरेक्ट एडमिशन मोड वाया सीयूटी पीजी एंड साउ एंट्रेंस टेस्ट. ये दो सेपरेट लिंक्स हैं. आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली. ठीक है, जो भी मोड से आपको जाना है, राइट. सो दैट्स अबाउट. The last thing left is the one you asked related to the fee for the application. I have to just check here एक बारी. I saw it. एक बारी let me just open up the brochure. Brochure में ऐसा कुछ है नहीं. Any particular information नहीं है which I need to share. हाँ, of course, SAU is now kind of shifted to a new campus altogether. ठीक है. So if you wanted to know about it. Then Eco 2-year program, 60 seats intake. We have already discussed that. Yep. Fee structure दिया हुआ है for the entire course, right? ये course के context में fee है. Again, SAU entrance test, direct admission through CUET PG, that's scholarship. Infra, that's it. Nothing much in the brochure that needs to be discussed separately. ठीक है. Anything you have in mind, you may ask. ठीक है, बाद में मत बोलना कि you missed out on anything. अब यहाँ पे देखो, ये एक वार्निंग साइन दिखाई दे रहा है. वो इसलिए सो दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि एक ही मीडियम नहीं है, एक ही मोड नहीं है ऑफ एडमिशन. देर आर टू सेपरेट मोड्स. और ऐसा भी नहीं है कि आपने जाके अगर साउ एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई कर दिया एंड यू वांट एडमिशन वाया, और आप ये सोचो कि मैंने अप्लाई तो कर दिया था, मैंने रजिस्टर तो कर दिया था, बट they are not accepting my CUT score. They want me to go out there and appear for SAU exam. So make sure आप सही जगह पे अप्लाई करो. SAU एंट्रेंस टेस्ट वाला रजिस्ट्रेशन पोर्टल अलग है, CUT PG वाला पोर्टल अलग है. It's very important you don't mix it up. I'm just waiting. If you have any queries, you may ask. Meanwhile, I'll just confirm you the fees अगर यहाँ पे मुझे ये दिख जाता है तो. I'm just not able to see यहाँ पे specifically. I'll just wait for 5-10 minutes. कोई भी query है तो आप पूछ लो. Meanwhile, I'm just searching for the fees. Center-based online, yeah, that we have already discussed. Though modes we have discussed. आई गेस शायद आपको जब आप इसको अप्लाई करने जाओगे ना फॉर्म में, देन ओनली इट विल रिफ्लेक्ट. ठीक है. मॉर्निंग का आई ऑल्सो कंफर्म यू द टाइमिंग. फॉर इंडिया द टाइमिंग इज अराउंड 9:30 AM to 11:30. ठीक है. सो आपका वैसे भी 26 का मॉर्निंग सेशन है. 26 मॉर्निंग सेशन 9:30 to 11:30, 2 hours that we have already discussed. ठीक है. That's it from this session, right? I'll see अगर if I'm able to see the registration fee separately तो I'll put it in the comment section. बाकी और कुछ नहीं है सच, because ये सारा जो fee है that's the course fee.
not the application fee as such. ठीक है, that's it from this session, and in case if there's any update, we'll let you know, right? और अगर साउ से रिलेटेड कोई क्वेरी है आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो आप प्लीज व्हाट्सएप कर लेना. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर.